Hello and a very good evening to all of you. Welcome to Regulatory Bodies Vertical of Adda 247. This is Arushi. I'm here to guide you to how to prepare for current affairs and general awareness for exams like RBI Grade B, NABARD, SEBI Grade A and any other regulatory body exam that you may attempt in the future. So before we start with our current affairs for today, let's just have a look at a quote. Although मैं motivation में इतना ज़्यादा believe नहीं करती. Why? Because if you are preparing for any competitive exams, obviously you want a job. If you are preparing for a job, if you are writing exams for a respectful job, get settled in life, I think that enough is a motivation for you all. The lifestyle that you will get after becoming RBI Grade B officers, the pay scale, the stability, everything in itself should be a motivating factor, right? So I expect you all to be, at that stage, at that maturity level already enough that you take the initiative to put your life together and, prepare in a disciplined way. However, if you are still procrastinating, especially if you are preparing for next year's attempt for all these exams, if you are still procrastinating, if you are not preparing up to the mark, I suggest you to, stop delaying things, delaying things, and right now is the right time, and only you have to do it. No one will come to you and tell you to do it because there is already a lot of competition. People are already focused in their own lives to better their own situations. So no one really cares what you do and what you not do. Only you should care what you do and what you not do, because it is the question of your own future. There is already a lot of competition. None of your friends is also going to tell you to study. You have to take the initiative to study. So get out of your comfort zone. Stop being a couch potato. Stop being comfortable. Get out of your comfort zone and start completing your targets already, because it is already half the year now. You only have 6 months more for the year to end. And then, in no time, the exams will again start, and then you will start regretting why did you not start in time. So get out of your comfort zone. A ship in the harbor is always safe. But that's not why ships are built. You are built to sail. You are built to sail through all the difficulties. You are built to sail through all the challenges of life. Okay, so procrastination and being lazy is something that you cannot really afford. Okay, so if you have not started solving sectional, if you have not started solving mock tests, start it already. Start covering the syllabus, start writing tests, analyze your mistakes, get yourself in the test taking habit, get into action, right? Start sailing. That's what I'm trying to say. Okay, so I think this was enough motivation for the day. Let's start. Okay, download our app and join our Telegram channel. Telegram channel pe you will get the PDF of this session. You will get the PDF of our daily current affairs session. The slide is going to be very, very interesting. Let me, preface you. Let me give you a prologue before we start with the slides. Not only some of the latest current affairs are covered, but इस हफ्ते जितने भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आई थी, जितने भी इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स आई थी, बीट इन द हिंदू और द इकोनॉमिक टाइम्स और एनी अदर वेबसाइट लाइक PIB or RBI, I have taken that up as well. So not only this week's current affairs, but also some of the important news from 24th of June as well. 24th and some of the previous days 26th June तक का भी इसमें काफ़ी हद तक covered है. And any latest news that might be pending, it will also be soon be covered. So please don't worry. Okay, some of the old news are there, but it is very, very important and relevant from the exam point of view, because it doesn't matter कि news कितनी नई और कितनी पुरानी, it doesn't matter. What matters is why a particular topic was in news, and it can definitely always be asked in the examination. And even if not, you should actually be knowing about it, because you are preparing for such exams. That knowledge in these sectors is expected out of you. If you don't know, then it's futile. So let's start with the session for today. Current affairs for regulatory body examinations. Sterlite copper. Sterlite copper is a very big plant.
It is situated in Thoothukudi district of Tamil Nadu. It employs over 5,000 people. It manufactures around a large share of India's copper needs is manufactured by this plant, but this plant has been shut down since 2018 because of the protests by the local people. Now the question is asking you, Abhi Sterlite Copper Plant has issued an expression of interest for the sale of the plant. Who is the parent company of the plant? So basically, you have options: Hindustan Copper Limited, Vidalco, Hindalco, Madhav. So all these are actually copper and mineral development limited companies, right? And choosing between these options is something, you know, it's not wise to choose from such options if you do not know the exact correct answer, right? Unlike in UPSC examination जहाँ पे आप लोग अपना elimination technique use करते हो by using conceptual knowledge and clarity, in most of the questions in these one-liner exam, you've got to know the exact answer and the exact knowledge of a particular topic. However, some questions, कुछ आजकल RBI grade B में भी कुछ statement based question आ रहे हैं जहाँ पे आप elimination use कर सकते हो. We will see about that in our later sessions. So yes, the correct answer here is Vedanta Group. Vedanta Group has issued an expression of interest for the sale of the copper plant. Why? Because it has been shut down since 2018. 2018 से बंद पड़ा because of the protest by the local people. And restarting operations in this plant will cost around 5,000 crore minimum expense लगेगा if the group is to restart the manufacturing in this plant. More than 25% of India's copper demand, is met by Sterlite Copper. When it was operational, it gave a very important boost to the local economy. और ना ही ये copper, but उससे allied products like sulfuric acid, reverse osmosis plants, oxygen generation units, everything that can be related or manufactured out of it, it was manufactured by the plant. So it is actually a very, very big unit consisting of several basic small plants. So that is what it is about. This is what an expression of interest looks like. And yes, Vedanta Group ने Axis Bank के साथ ये expression of interest issue किया है. Oil, gas, zinc, lead, silver, ये सब largest producers हैं. ESG क्या होता है? एक environmental social governance भी. For example, EIA and social impact assessment, environment impact assessment, इन सबको consider करके वेदांता ग्रुप अपने plants का operation करता है. तो I don't know, despite the employment generation and the boost in local economy, why the people are protesting for the plant to shut down. So that is not very feasible. That is not. See, these are some of the important units. These are some of the important units that are there in Vedanta Group. It's a huge conglomerate. So another interesting question, अभी रोहित सर ने भी एक session लिया था about details about Nipun scheme. Okay, National Initiative for Promoting and Upskilling of Nirman Workers. So Nipun scheme is recently launched by the Ministry of Housing and Urban Affairs. The question is asking you which agency will implement it. Which agency is implemented? So very simple, if you know the details about the Nipun scheme कि ये 1 lakh construction workers को upskilling और reskilling की facilities या training provide करेगा to 1 lakh construction workers, you will already know that the scheme is being implemented by National Skill Development Corporation. Okay, so it is very important कि जब आप government schemes पढ़ रहे हो, when you are preparing for government schemes, you should take note of some of the very, very important facts that can be asked in one line exam, and कभी-कभी तो civil service UPSC में भी आ सकता है. And आज की डेट में there is not much difference between these two examinations as far as the section of current affairs is concerned. So जब आप गवर्नमेंट स्कीम्स प्रिपेयर कर रहे हो, आपको कौन कौन सी चीज़ें बुलेट पॉइंट्स बना के नोट्स बनाने हैं अपने, चाहे आप ऑनलाइन बनाओ, ऑफलाइन बनाओ, चाहे PDF से डायरेक्टली उठा लो या फिर आप मैगजीन पढ़ो, यू शुड ऑलवेज मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दीज नोट्स. फॉर एग्जाम्पल, टोटल आउटले क्या है, टोटल आउटले क्या है, एम क्या है उस स्कीम का, एम या ऑब्जेक्टिव क्या है,
बेनिफिशियरीज कौन है, बेनिफिशियरीज कौन है और उनका एलिजिबिलिटी क्या है, राइट। सी टोटल आउटले, एम एंड ऑब्जेक्टिव, बेनिफिशियरीज एंड देयर एलिजिबिलिटी, कौन सी मिनिस्ट्री ने ये स्कीम इशू करी है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हु इज द implementing agency, who is the implementing agency of the scheme. ये 5 बेसिक पॉइंट्स हैं, ये 5 बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा एक्सक्लूसिवली पढ़ना है किसी भी गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड. उससे रिलेटेड एडिशनल बेनिफिट्स एंड एवरीथिंग एल्स विल ऑलरेडी बी कवर्ड इन द स्कीम, बट दीज आर सम 5 basic things. Whenever you are preparing government schemes, these are the 5 basic things that you should look out of and take note of. Okay, so the correct answer here we already know, National Skill Development Corporation. बाकी सब मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर आता है. दिस इज अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन. सो दिस इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी दैट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. Who is the Union Minister of Skill Development and Entrepreneurship? Do mention it in the comments below. Aim क्या है? To train 1 lakh construction workers under the flagship Deen Dayal Upadhyay Day NULM mission. ये Day NULM, you all know about this mission and the scheme. अगर नहीं पता है तो मैंने आपको जो फॉर्मेट बनाया, write it down or take an online, make an online document and write down all those facts about Day NULM, which ministry implements it, implementing agency. Of course, another important thing, year of launch क्या है. Okay, तो ये निपुण स्कीम नहीं है, निपुण प्रोजेक्ट है. एक बात आप और भी ध्यान रख लीजिए, you should know the difference between निपुण स्कीम versus निपुण प्रोजेक्ट. ओके, निपुण स्कीम जो है, इट इज अ रीडिंग स्किल एनहांसमेंट स्कीम दैट इज मेंट फॉर चिल्ड्रन इन स्कूल, स्पेशली प्राइमरी स्कूल. सो निपुण स्कीम लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने. Nippon scheme has been launched by the Ministry of Education, whereas the Nippon project has been launched by the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. ये आप ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम में निपुण स्कीम आता है तो दैट इज रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. अगर एग्जाम में निपुण प्रोजेक्ट आता है सो दैट इज रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. ओके, 1 lakh कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है अंडर द फ्लैगशिप डे NULM स्कीम के अंडर. कंस्ट्रक्शन वर्कर्स दे विल बी ट्रेन थ्रू फ्रेश स्किलिंग, अप स्किलिंग, रीस्किलिंग प्रोग्राम्स के थ्रू इनको ट्रेनिंग दी जाएगी. इसका सिग्निफिकेंस क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन की स्पिरिट को ये प्रमोट करता है. ओके, एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन की स्पिरिट को ये स्कीम प्रमोट करती है. This move will provide work opportunities to them in foreign countries also. Okay, foreign countries में for example जितने भी immigrant workers and countries like UAE and Kuwait, उन सब को भी ये upskilling और reskilling की training provide करेगी all the workers in the foreign countries. पानी So this move will provide opportunities to them. ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिए. आई फॉरगॉट टू हाईलाइट इट. फॉरेन कंट्रीज के वर्कर्स भी, इंडियन एमिग्रेंट्स जो फॉरेन कंट्रीज में काम करें, दे आर ऑल्सो वेरी मच एलिजिबल फॉर दिस स्कीम. एंड टोटल 1 lakh कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को, थैंक यू सो मच, को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी. ओके, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हम लोगों ने देख ही लिया है कौन है. MSD मिनिस्ट्री के अंदर आती है. दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल एग्जीक्यूशन, ट्रेनिंग एंड ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग. सो ये बहुत ही बेसिक था स्कीम के बारे में, वेरी वेरी बेसिक. एडिशनल
एडिशनल फीचर क्या है, ऑन साइट स्किल ट्रेनिंग with RPL certification to 80,000 construction workers. It will be co-branded by Ministry of Housing and Urban Affairs. 14,000 candidates को fresh skilling infrastructure sector skill council and plumbing trades initiative के through provide किया जाएगा. So these are some additional 2 benefits on this scheme. But this is not it here. This is not here. It ends. It is Nippon project. It will provide provide trainees with Kaushal Bima Yojana. Kaushal Bima Yojana means what? What do you mean by Kaushal? What do you mean by Bima? Bima means insurance. So Kaushal Bima Yojana means accidents on duties, accidents while performing your duties. So industrial workers के लिए industrial worker insurance होता है, उसी को हिंदी में कौशल बीमा योजना कहते हैं. That is accidental insurance, जिसका कवरेज 2 लाख का होगा. और डिजिटल स्किल्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे सो दैट दे कैन बिकम एंटरप्रेन्योर्स, दे कैन यूज डिजिटल ट्रांजैक्शंस एंड डिजिटल फाइनेंस फैसिलिटीज. ओके, सो ये भी इम्पॉर्टेंट है. डिजिटल स्किल्स में भी ट्रेनिंग दी जाएगी टू प्रमोट entrepreneurship among these workers. Please don't mind guys, I have a sore throat. So Kotak Investment Advisors have tied up with Abu Dhabi Investment Authority. Now ADIA is one of the most important significant investors in India, especially जो National Infrastructure Investment Fund है. The very first agency to invest in National Infrastructure Investment Fund was ADIA itself. So सिग्निफिकेंट 1000 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है ऑलरेडी हमारी कंट्री में. एंड बहुत सारे MOUs वेरियस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ आडिया साइन कर चुका है. सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन. ओके, कोटक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स ने भी आडिया के साथ एक MOU साइन किया है. 4600 नॉट रुपीज़ 4600 का MOU नहीं है, 4600 करोड़ का MOU है. 4600 करोड़ का MOU है टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इन विच सेक्टर. कौन से स्ट्रक्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट डेवलप करने के लिए ये टाई अप किया गया है. यू हैव ऑप्शंस IT, हाइपरलूप यू ऑल नो, रैपिड ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी, ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर, रैपिड मेट्रो रेल सर्विस एंड 5G नेटवर्क. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिटेल्स एंड प्रॉपर्टी है. retail property investment. Okay, so these are some of this is the main sector जहाँ पे आदिया ने कोटक इन्वेस्टमेंट एजेंसी के साथ ही किया है MOU साइन इन्वेस्ट करने के लिए. सो बेसिकली जितने भी ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर है, सो यू ऑल नो दैट इंडिया में सर्विस सेक्टर का ग्रोथ की वजह से इंडिया सर्व्स एज अ वेरी फर्टाइल, एज अ वेरी रिच ग्राउंड फॉर selling its office infrastructure, leasing out its office infrastructure to various MNCs and industries. So key infrastructure top property markets जैसे कि मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, पुणे, गुरुग्राम, हैदराबाद, चेन्नई, यहाँ पे ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाएगा, उसको डेवलप किया जाएगा. ओके, offshoring demands return to offices. What is return to offices? You all must have heard about the term returnship. So basically COVID के बाद work from home start हो गया था, but after the situations have stabilized to a far extent, people are again returning back to the offices. So this is one of the growth of service sector to the Indian economy is seen as substantial scope for creating portfolio of quality office assets. Okay. 12th real estate fund है by Kotak Investment Agency. Okay, ये it has raised 2.8 billion in its realty fund series. CEO of Kotak Realty Fund, you all know Vikas Chimakurti, and CEO of ADIA, that is Abu Dhabi Investment Authority, is Muhammad Al Kubaisi. Okay, so this was all about it. Important tha MOU, I thought to cover it. So which sector is targeted by rebate of state central taxes and levy scheme? ROSCTL. ROSCTL कौन से सेक्टर को प्रमोट करते हैं? नाउ द स्कीम इज टॉकिंग अबाउट rebate of what? Central taxes and levies.
तो सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवीज का रीबेट हम लोग कौन से सेक्टर में देंगे? अ सेक्टर दैट इज अंडर डेवलप्ड, अ सेक्टर दैट इज नॉट फाइनेंशियली अप टू द मार्क. फॉर एग्जाम्पल, क्या हम लोग रीबेट ऑन स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवीज क्या हम लोग किसी जायंट इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री या टेलीकॉम इंडस्ट्री को देंगे? दैट इज ऑलरेडी वेल ऑफ, दैट इज ऑलरेडी अर्निंग प्रॉफिट्स. रिलायंस जियोकॉम, रिलायंस इन्फोकॉम को क्या हम लोग रीबेट देंगे? नो. डिफेंस इंडस्ट्री में अगर एमएसएमई सेक्टर आता है तो येस दे कैन गेट मोर. MSME sector overall, all the industries that are MSME, within a certain threshold, they can get such rebates. Food processing industry, they are related to, agriculture sector, so they are also eligible for such rebate. But the correct answer here is textile sector. Electronic industry आप already eliminate कर सकते हैं. Textile sector will be targeted to get the rebate on central taxes and levy scheme. Central taxes and levy scheme basically Directorate General of Foreign Trade implement करता है. That comes under the Ministry of Commerce and Industry. I will sit here for a while. So Ministry of Commerce and Industry implements the scheme. Okay. You can read about the details of the scheme over here. Garment exporters, ये न्यूज़ में क्यों आया था? बेसिकली न्यूज़ में इसलिए आया था बिकॉज द गारमेंट एक्सपोर्टर्स हैव बीन रिसेंटली इनकरिंग लॉसेस. तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के टैक्सेस में रीबेट एंड लेवीज प्रोवाइड करती है ये स्कीम इन बोथ बाय बोथ गिवन बाय द इंडस्ट्रीज टू बोथ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट टू ऑल द स्मॉल टेक्सटाइल एंड गारमेंट एक्सपोर्टर्स इन आवर कंट्री. वो रीबेट पहले कैश में इम्बर्स होता था डायरेक्टली इन द बैंक अकाउंट ऑफ द एक्सपोर्टर्स, बट नाउ द गवर्नमेंट मेड अ सर्टन चेंज. Now that rebate is offered to these exporters in the form of scrips. So what are scrips? Scrips tradable securities होते हैं जो ये exporters use कर सकते हैं either to pay their import duties. अगर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई मशीनरी या इक्विपमेंट इंपोर्ट करना पड़ रहा है तो इंपोर्ट ड्यूटीज पे करने के लिए स्क्रिप्ट्स यूज कर सकते हैं. सेकेंडली secondly they can trade them in the securities market. So schemes introduced a change. These rebates were monetarily compensated for in the bank accounts of the exporters. Oh God, it's a little bad. स्क्रिप्ट्स कैन बी ट्रेडेड इन द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट मार्केट में भी स्क्रिप्ट्स की ट्रेडिंग करी जा सकती है. These scripts are given to the importers who can use these instruments as an alternative to cash to pay import duties. So these scripts are traded at a discount of 20%. Now put a margin pressure on garment exporters. क्यों? क्योंकि अब ये scripts securities discount में trade होती हैं, and when they are traded in discounts, the exporters they suffer a loss. They suffer a loss on the rebate amount that they are getting from the government. तो इसकी वजह से काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहा है गारमेंट इंडस्ट्री में. अराउंड 6,000 करोड़ का रीबेट इज गिवन बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू द एक्सपोर्टर्स. इसकी वजह से लॉस कितना इनकर करना पड़ा है? बिकॉज ऑफ द 20% डिस्काउंट रेट एट विच द स्क्रिप्ट्स आर बीइंग ट्रेडेड, दे आर इनकरिंग अ लॉस टू द एक्सटेंट ऑफ 1,200 crore. That is the 20% of the amount of rebate. So इसका way forward देखिए that the government should change back the scheme to its original form, where the reimbursement was given to these exporters in the form of cash और directly monetary compensation के through भी इसको rebate offer किया जा सकता है. इंडिया के annual textile imports is worth $44 billion.
उसमें से $16 billion और 36% are from the garment sector. We can have a look at this map. ये मैप है important textile industries that are related. क्यों हम लोग ये मैप क्यों पढ़ रहे हैं भाई? क्योंकि static GK is also important ना, and knowing about it will do you know harm. Important cotton industries कहाँ पे? Silk, wool and jute industries. Jute industries obviously सबसे ज़्यादा west में होंगी, but some of the jute industries are also located here. Cotton industries, we think that some of the most important cotton industries are located in the state of Maharashtra and Gujarat, but yes, South India में भी cotton industries काफ़ी भारी मात्रा में है. Of course, silk industries, you all know silk industries. So this is a basic overview. Textile industries distribution क्या है हमारी country में? You should know about it, not only because it can be important from the exam point of view, but also general awareness है. हम लोग static GK भी cover करते हैं. You should be generally aware about all these basic facts. बोनो सागर एक बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश. 24 मई को ये कंडक्ट कराया गया था. ओके, सो इट इज़ अ नेवल एक्सरसाइज. ओके, तो ये कहाँ पे कौन से पोर्ट में कंडक्ट कराया गया? द क्वेश्चन इज आस्किंग यू दैट. करेक्ट आंसर हियर इज पोर्ट मोंगला. पोर्ट मोंगला में बोनो सागर बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश. Port Mongla is located in Bangladesh itself. Port Mongla, that is there in Bangladesh. सबसे busy port है, पुरुषा रिवर के पास is located है. Okay, and बाकी सब हल्दिया पोर्ट, काकीनाडा, विशाखापट्टनम, ये 3 पोर्ट्स इंडिया में है. सितवे पोर्ट इज इन म्यांमार. Okay, so Indian Navy and Bangladesh Navy, they are conducting this joint naval exercise to improve their interoperability and joint operation skills. Usually जितनी भी bilateral military exercises होती हैं, they are focused on improving their interoperability and bilateral skills. Harbor phase of the exercise includes professional and social interactions. Sea phase of the exercises facilitates navies to participate in intensive surface warfare drills, weapon firing drills. यानी कि sea phase, harbor phase is a friendly part of the exercise. Sea phase is the implementing operational or warfare part of the exercise. So this is the basic protocol that is generally followed for all the joint naval exercises that are conducted. Who chairs the cellular operators? Sorry, who chairs the Cellular Operators Association of India? Cellular Operators Association of India was recently in news. उन्होंने ट्रायल टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को एक लेटर ऑफ इंटरेस्ट या मैसेज लिखा है टू रेगुलेट द स्पेक्ट्रम एलोकेशन लाइसेंस करके स्पेक्ट्रम एलोकेशन दिया जाए टू कैप्टिव 5G नेटवर्क्स. So that they are not allowed any backdoor entry. They are not allowed any backdoor entry in the telecom market. That is what their basic issue is. We will discuss in length कि 5G technology actually होती क्या है, उसको कैसे operate किया जाता है, and why is it called captive network, and what this issue is all about. This is actually an issue. This is a very important issue. इसको काउंटर किया है ब्रॉडकास्टर्स इंडिया फोरम ने प्रपोजल को COAI के प्रपोजल को काउंटर किया, एंड दैट इज व्हाई इट हैज बीन रिसेंटली इन न्यूज़. द चेयरपर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज मिस्टर अजय पुरी. डॉक्टर PD वाघेला इज द चेयरपर्सन ऑफ ट्राई. सुनील भारती मित्तल इज द चेयरपर्सन ऑफ भारती इंटरप्राइजेस. ओके, ये दोनों भी COAI से जुड़े हुए हैं, बट द चेयरपर्सन इज मिस्टर अजय पुरी. Okay, COAI basically 3 key operational members of COAI are Vodafone Idea, Jio Infocom
and Airtel. These are some important members, 3 important members of Cellular Operators Authority of India. Main members तो ये 3 industries हैं. Okay. Non-government trade association है. Indian Mobile Congress (COAI) conducts annual Indian Mobile Congress jointly with Department of Telecom. 2017 में स्टार्ट किया था और न्यूज़ में किया है. We have already discussed about it. United Nations Ocean Conference will be conducted from 27 June to 1st of July. Theme क्या है? Scaling up ocean action based on science, innovation for implementation of Goal 14. Goal 14, Sustainable Development Goal number 14 is related to life below water. So जितनी भी endemic marine species हैं, ocean pollution है, ocean acidification है, plastic pollution, microplastic pollution, all these factors become important under SDG 14. Stock taking partnership solutions is being held in which country? कौन सी country में ये held किया जा रहा है? Correct answer है पोर्टुगल में ये यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करवाया जाएगा, पोर्टुगल्स कैपिटल लिस्बॉन में, एंड इट विल बी को होस्टेड बाय केनिया. सो ये इवेंट जो है इट इज़ बीइंग co-hosted by Kenya and Portugal, and the venue of the event is in Lisbon, that is the capital of Portugal. इंडिया का प्रपोजल है ये, सेव आवर ओशन, प्रोटेक्ट द फ्यूचर. ये स्कीम यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस का थीम है, स्केलिंग अप ऑफ ओशन. ये आप लोगों ने देख ही लिया था. ये कॉन्फ्रेंस का थीम है, नोट द डिफरेंस. और ये इंडिया का प्रपोजल है, वेयर या फिर टॉपिक है ऑन विच इंडिया विल डेलिब्रेट. तो मरीन पोल्यूशन, ओशन एसिडिफिकेशन, coastal ecosystem, these are all some of the important topics that India will be advocating on. Conserving, restoring, sustainable fisheries, ocean acidification. Okay. SDG टारगेट 14 आप देख लो कौन कौन से हैं. 2020 तक कौन से टारगेट्स हैं? कंजर्व एटलीस्ट 10% ऑफ द कोस्टल एंड मरीन एरियाज, अनसस्टेनेबल फिशरीज को कंट्रोल करना, address the impact of ocean acidification. Okay. 2025 तक टारगेट है मरीन पोल्यूशन को कंट्रोल करना एंड इंक्रीज इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ सिड्स, दैट इज स्मॉल आइलैंड डेवलपमेंट नेशंस, जो कि बहुत ज़्यादा रिस्क में है या वल्नरेबल है टू यू नो द वेगरीज ऑफ क्लाइमेट चेंज. तो ये 2030 का गैप है. सो यू कैन हैव अ लुक एट इट. Using this, let's use this opportunity to have a look at important marine biodiversity और marine national parks that are there in India. क्यों? क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था कि करंट अफेयर्स जो है वो स्टैटिक, करंट अफेयर्स का जो स्टैटिक जी के पार्ट है, इट इज़ यूजुअली डिराइव्ड, स्टैटिक जी के इज यूजुअली डिराइव्ड फ्रॉम द जनरल अवेयरनेस दैट इज देयर इन करंट अफेयर्स सेक्शन. Okay, so we have messages from Arushi Mishra that are being deleted anyway. So Bhitarkarnika, Gulf of Kutch, Sundarban, Gulf of Mannar, these are the important marine national parks of our country. Gahirmata, Chilika Lake, Pulikat Lake, Kadalduni and Port Calumet are some of the important marine sanctuaries in our country. So do have a look at it, do take a note of it. आ सकता है ये स्टैटिक जीके में इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इट इज़ यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस में इंडिया भी सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है. यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज डॉक्टर जितेंद्र सिंह इज कंट्रीब्यूटिंग टू इट. Which state government has initiated recycling for life campaign? Okay, so this question is also related to United Nations Ocean Conference. Okay, India will promote this initiative on the event on a national basis. तो ये पुडुचेरी का जो कराईकाल यूनिट है, पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी का जो कराईकाल यूनिट है, that has started recycling for life campaign. बेसिकली सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट के बेसिस पे
ये वेस्ट टू वेल्थ कैंपेन का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, इसको मन की बात में भी इसका मेंशन किया गया था. सो दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल. बेसिकली ऑर्गेनिक वेस्ट को कंपोस्ट में कन्वर्ट करना एंड कोस्टल पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन एंड कोस्ट्स एंड ओश को प्रिवेंट करना, इट इज़ वन ऑफ द मेन टारगेट्स ऑफ द इनिशिएटिव. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट. Which city ranks the lowest in global livability index? An annual publication by the Economist. So global livability index में इंडिया का रैंक हर साल की तरह इस साल भी लो आया है. एंड द लीस्ट लिवेबल सिटी इन इंडिया, इट इज मुंबई, रैंक्ड एट 117th. न्यू दिल्ली का रैंक है 112, मुंबई का रैंक है 117. इट इज द लीस्ट लिवेबल सिटी इन इंडिया. ओके, 140 कंट्रीज को मेजर करता है, ये टेकिंग द बेस लाइन एज यूएस. और 5 ब्रॉड कैटेगरीज इस रिपोर्ट की ये है. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड गाइज, प्लीज डोंट माइंड, आई एम नॉट वेल, ट्राइंग टू save my energy. Index has been running over for a decade. Potential challenges to an individual lifestyle, each city allowing for comparison. Okay, so we have already discussed this. To take a screenshot of the slide. Parameters आप देख लो क्या है. Okay, पहला इंडेक्स कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था, कब इंडेक्स इनिशिएट हुआ था, वो भी आप फाइंड आउट कर लो. Which state or United Nations, United Territories celebrate the Saujao festival? Saujao festival is celebrated by the state of Goa. Goa celebrate करते हैं Saujao festival to commemorate the name of to celebrate Saint John Baptista. Saint John the Baptista, people believe he was baptized by Jesus Christ himself. So उसके ऑनर में people of Goa, they celebrate this festival. Usually they jump in the wells, but since wells are getting fewer and fewer in number, swimming pool में ये festival celebrate होता है. Carnival की तरह people celebrated. They wear good dresses, they get out, they meet other people. So it is a very jovial festival of Goa. Let's use this opportunity to see जून के मंथ में important state festivals क्या है. So basically जब आप phase 1 या किसी भी कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हो, तो for example RBI grade B is in the month of May. तो मार्च अप्रैल मई में जितने important state government festivals या फिर जितने भी important festivals जो न्यूज़ एंड स्पेशली जो PIB में कवर्ड होता है, उनको आप ज़रूर ध्यान में रख लो. At least one question will definitely come from it. So, and also as citizens of India, you should know कि कौन सा फेस्टिवल कौन सा स्टेट गवर्नमेंट में, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है, उसको नेशनल लेवल पे रिकग्निशन मिलती है. To celebrate the diversity. So this is a list of the important state governments festivals or important festivals that are celebrated in the month of June in various states, various cities. Okay, so this was it for today. Thank you so much for watching, and moreover thank you so much for bearing with me. I'm so sorry for not being in a very good health today, but I hope the sessions will be more regular. And thank you so much for watching. I hope the session was insightful and useful to all of you. Okay, so do like, share, subscribe, share it with your friends and with anyone with whom you find the session useful. Thank you so much for watching. Take care and bye-bye.